सेक्शन 3 पे चलते हैं गाइस पहले, और पूरा सॉल्व करने के बाद ही उसको कर लेंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेक्शन का तो आंसर्स डायरेक्टली लिख लिए हैं, तो कुछ टाइम तो मैंने बचा लिया है अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के टाइम पे ही। मैंने ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 मिनट तो बच ही गए होंगे मेरे, क्योंकि सेक्शन 1 स्लो होता है, राइट। बाकी के सेक्शन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। और ये वापस हमारे पास MCQs हैं, और यहाँ पे 1 वर्ड ओनली है। लेट्स प्ले द ऑडियो फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैव टू डू, और कितने क्वेश्चंस को मुझे पढ़ना है, राइट। ये ट्रूडी और ये स्टीवर्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 2 से 3 स्पीकर होंगे, राइट। चलो देखते हैं पहले कितने स्पीकर्स हैं और इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट्स गो। You will hear 2 students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. ओके गाइस, आप मेरी तरह ये बॉक्सेस बना सकते हो, राइट, क्योंकि ये फिर वो चीज़ों को हाईलाइट करते हैं लाइब्रेरी डिफरेंट कंट्रीज में। Now listen carefully and answer questions 21 to 23. Okay, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? Okay. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books are being digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function. But I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. ओके गाइज, लेट्स डिस्कस द आंसर्स हियर। आई एम वेरी मच श्योर कि आंसर्स यही होंगे। इसके लिए 21 के लिए बी रहेगा, बिकॉज उसने जो ये ट्रूडी थी उसने स्टीवर्ट की इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में के बारे में हम पढ़ेंगे और सर्विस करेंगे, बट यहाँ पे उसने मना कर दिया कि डिफरेंट कंट्रीज़ को छोड़ो, इस कंट्री के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फंडिंग के ऊपर वापस स्टीवर्ट ने उसको सजेस्ट करा है कि फंडिंग के ऊपर बात करना चाहिए, कि जो फंडिंग है पब्लिक लाइब्रेरीज की वो कैसे बदली है। और इसमें वापस ट्रूडी उसको मना करती है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पेपर शॉर्ट लिखना है हमें, और यहाँ पर अगर हम इस टॉपिक को टच करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो ये भी नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज बी। यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करा है गाइड, यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करा। नाउ मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जो लोग केबीसी देखते थे कभी किसी ज़माने में मेरी तरह, उनको भी मेथड ऑफ एलिमिनेशन की नॉलेज अच्छे से होगी। मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है जब आप देख लेते हैं कि क्या नहीं हो सकता और क्या बचता है लास्ट में जो ऑप्शन,
उसके साथ जाते हो, उसी मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। और यहाँ पे भी जब हम देख सकते हैं कि उन्होंने ट्रूडी है उसने कहा कि मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ने में ऑनलाइन, यानी कि जैसे हम लोग एनी बुक्स वगैरह तरह की बुक एप्लीकेशंस को यूज़ करके ई बुक्स पढ़ते हैं, तो उसने कहा मुझे मज़ा नहीं आता और मुझे लगता है लंबा टाइम लग जाता है, फिजिकल बुक जो होती है वो बेटर होती है। और यहाँ पर स्टीवर्ट का कहना था कि नहीं, आई एन्जॉय इट। तो ये वाला हमारा राइट आंसर था, क्योंकि उसने कहा कि जो फ्री डिजिटलाइज बुक्स हैं वो तो बहुत पुरानी होंगी, क्योंकि 70 ईयर्स के बाद ही जो कॉपीराइट है वो ख़त्म होती है। तो 70 ईयर्स के बाद ही कोई किताब फ्री में डिजिटलाइज लाइब्रेरी के लिए दी जा सकती है या फिर ली जा सकती है या वॉट एवर, ठीक है। इसका मतलब जो भी किताबें डिजिटलाइज लाइब्रेरी में होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वो सब 70 साल पुरानी होंगी। स्टीवर्ट एक्सपेक्ट दैट इन द फ्यूचर लाइब्रेरीज विल, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेंटेन करेंगे ट्रेडिशनल फंक्शंस को, लेकिन यहाँ पे उनको ऐसा लगा कि जिस लेवल पर जिस स्पीड से डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, तो हो सकता है कि कम्युनिटीज़ जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए कोई सेंटर ना बने, क्योंकि लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे नहीं, टाइम के साथ चीज़ें बदल रहे हैं। तो मे बी आने वाले समय में हमें वहाँ पे कोई किताब ना दिखे, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स दिखाई दे। तो ये थे हमारे आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये मुझे ईजिएस्ट लगता है गाइस, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ वन वर्ड डालना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है, कोई ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। दिस इज़ द ईजिएस्ट सेक्शन ऑफ योर आइल्स लिसनिंग, जिसमें आपको सिर्फ वन वर्ड डालना है। तो लेट्स सी कि वो हमें कितना टाइम देते हैं प्रिपेयर करने के लिए ऑडियो में, और उसके अकॉर्डिंगली हम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। लेट्स गो फॉर इट। Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 24 to 30. ओके, लाइब्रेरी का खुद का क्या होना चाहिए, वाईफाई? Now listen I don't and know. answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting and raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, we could interview some of the staff and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always seems to be a lot of talking, but never music. I don't know if that's a policy or it just happens. I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like, what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing, there's the question of the kind of insurance the library needs to have, in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Oh, I've just thought, you know, people might ask in the library about local organisations like sports clubs. Well, I wonder if they keep a database or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Then something else I'd like to know is... That is the end of section 3. Okay guys, now this was very easy actually. Whether it has an own budget की बात कर रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरीज को अगर कंपनी लाइक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो लाइब्रेरी का डाटाबेस बना के रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किताबों को रखना, सेफ रखना, उनके पेपर्स को कीड़ा ना खा जाए,
ठीक है, जैसे हमें पता है बुक को बहुत इजीली जो होते हैं इंसेक्ट अटैक कर देते हैं, या फिर बुक के जो पेजेस होते हैं वो येलोइश टर्न होना शुरू हो जाते हैं, लाइब्रेरीज को सनलाइट से बचा के रखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो खुद को करने के लिए बजट उनके पास अपना है या नहीं, ये आंसर 100% श्योर हूँ मैं। और हाउ इट्स अफेक्टेड बाय द लॉज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैसिलिटीज़, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, आई हैव एक्चुअली स्किप्ड दिस होल आंसर, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक फैसिलिटीज़ के बारे में वो बात कर रहे थे, ज़्यादा बात कर रहे थे, तो मे बी यही होगा। हाउ द डिज़ाइन नीड्स टू टेक द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स इनटू अकाउंट, येस ये इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि मेरे को याद है कि जब हम कॉलेज में थे, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो हमारी लाइब्रेरी में आग लग गई थी और सेफ्टी हैजर्ड्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों को सीरियस बर्न्स आए थे, और उसके बाद हमें इस बारे में काफ़ी पता चला था थ्रू न्यूज़पेपर्स कि जो लाइब्रेरी है उसके पास सेवरल एंट्रेंसेस होने चाहिए और एग्जिट गेट्स होने चाहिए, सेवरल होने चाहिए कि अगर कुछ ऐसा रीज़न, कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो लोग भाग सकते हैं, लाइब्रेरी से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या फिर किसी भी इंसान को कोई सीरियस प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको पता है पेपर सूखा होता है, तो पेपर में आग लग जाए तो बहुत मुश्किल है उस आग को बुझाना और कंट्रोल करना। तो इसलिए वो मुझे याद है कि सेफ्टी की वजह से सेफ्टी हो सकती है, डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें जितने भी लोग अंदर हैं वो सेफ रहें। उसके बाद एक्सीडेंट के केस में मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, मुझे लग रहा था कि पहले से ही कहीं ना कहीं आंसर होगा इंश्योरेंस। फेमस पीपल्स डायरी, ये उसने बोला वेल नोन करके, उसने एग्जैक्टली फेमस पर्सन वर्ड यूज़ नहीं करा है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सिनोनिम्स को यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट डिटो वही वर्ड्स यूज़ नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे उसने बोला है कि वेल पर्सन की डायरी वहाँ क्या कर रही है, ये मुझे नहीं पता। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस का डेटाबेस, ठीक है। अभी देखो गाइस क्या होता है, अगर आप JNK से हैं तो आपको येलो पेजेस के बारे में नॉलेज होगी। येलो पेजेस भी एक तरह का कैटलॉग ही है जिसपे पूरे जम्मू में जितनी भी शॉप्स हैं, छोटी बड़ी आउटलेट, शोरूम्स, व्हाटएवर, सब कुछ उसमें कवर्ड है। आपको हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मिल सकता है, चाहे उसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुकान हो, ठीक है। उसी तरह के जो डेटाबेसेस होते हैं वो हर एक लाइब्रेरी को मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी ही एक सोर्स है जहाँ से हमें पता चलता है कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक इस स्टेट में या फिर इस कंट्री में क्या क्या हुआ, वो उस डेटाबेस से पता चलता है। और उसके बाद उसने बोला हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी इन अ म्यूजियम, तो एक कॉमन लाइब्रेरी जो बाहर रहती है सबके अप्रोच में, और वो एक लाइब्रेरी जो म्यूजियम में होती है, वो कितने आपस में डिफरेंट है। तो दो ही चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी, एक है कॉमन एक्सेसिबल लाइब्रेरी और दूसरी थी जो लाइब्रेरी म्यूजियम में होती है, राइट। तो उन दोनों में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सेक्शन 3। ओके स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन 3 जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि MCQs को कैसे सॉल्व करना है और जो फिलअप्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनके मेन वर्ब्स को आपने कैसे पहचानना है। अब आपको सेक्शन 3 का ऑडियो और वीडियो दोनों मिलने वाले हैं, ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम ज़रूर लिख दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। Section 3. You will hear two students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home.
And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 24 to 30. Now listen and answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting. And raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, we could interview some of the staff and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always seems to be a lot of talking, but never music. I don't know if that's a policy or it just happens. I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like, what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing. There's the question of the kind of insurance the library needs to have, in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Oh, I've just thought. You know, people might ask in the library about local organisations, like sports clubs. Well, I wonder if they keep a database, or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Then something else I'd like to know is... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn